does not allow me to leave you halfway through. So I shall continue with one more example so that all aspects of this particular topic are covered end to end. So please bear with me. Find the height of tide at 1200 hours GMT at Genprug, ATT Volume 1 on 6th day of March 1992. It's again a MMD second maths exam question of March 2019. We go to geographical index for ATT volume 1, geographical index being alphabetically organized. We go and hit Genprug, and what do we find? It's neither in caps nor in bold, so it happens to be a secondary port, and the number for Genprug is 1539D. So Genprug is found to be a secondary port with the number 1539 delta. Okay, so beta, at any step, if you have any doubt in your mind, let me know. We will stop it there and we will clarify that doubt. So we have just gone to the geographical index and found out our port. हमें अपना port number भी पता चल गया है. And since it is not given in bold letter or in capital letter, we came to know that this is a secondary port. So up to here, everybody okay? Okay, all right. Let's proceed ahead then. Having identified Genprug to be a secondary port with a number of 1539, we go to part 2 of ATT volume 1, which is numerically in the ascending order. We reach and hit Genprug as 1539D. Then we go to the top of the subsection to identify its standard port, and we find that Antwerp happens to be its standard port with a number 1539. We also pick out the relevant information about seasonal corrections, as we have already learned. Okay, so beta, are you able to go to this page where this data is given, 1539D? Sir, searching, sir. Okay, beta, Yes, sir. okay. Okay, once you are there, just let me know. सर एक डाउट था हाँ बोलो बेटा. सर ये जो मैंने यहाँ से डेटा निकाला 334 पेज से सर इसमें मुझे सीजनल चेंज नहीं दिए हुए हैं बुक में. ओके, अगर आपको किसी पेज के बॉटम में सीजनल चेंज ना दिखे तो बेटा आप उससे नेक्स्ट वाले पेज पे चले जाओ. मिला बेटा सीजनल चेंज? ये सब मिल गए. ओके, अब उस टेबल में बेटा देख लो 1539 कौन से रो में आता है. दैट इज द सीजनल करेक्शन. क्लियर है सर, मिल गए. ओके, सर ये जेंटबर्ग मिल गया था. सर ये लास्ट वाला सीजनल चेंज वाली टेबल यस सर मिल गया सर. It may sometime happens that seasonal change may not be given at the bottom of every page, because कई बार ऐसा होता है कि
2 या 3 पेज का जो सीजनल चेंज है वो एक ही टेबल में इन्होंने दे रखा होता है. सो इफ यू डोंट गेट द सीजनल चेंज एट द बॉटम ऑफ द पेज, जस्ट गो टू द नेक्स्ट पेज. सो नेक्स्ट पेज यू विल फाइंड कि आपकी पोर्ट का जो नंबर है उसका सीजनल चेंज आपको मिल जाएगा. Yes, sir. Okay, anybody else stuck with this beta? Anybody else having any problems? Great, very good beta. No, sir. वेरी गुड. सो अब हमें देखो बेटा सेकेंडरी पोर्ट का डाटा भी मिल गया है. हमें टाइम डिफरेंसेस मिल गए हैं. इट इज रिटन देयर +4:30 +4:15 +6:30 +6 o'clock. हमें हाइट डिफरेंसेस भी मिल गए हैं. -3.9 -33 -11 -04 -10. और हमें इसकी स्टैंडर्ड पोर्ट भी पता चल गई है. द स्टैंडर्ड पोर्ट इज एंटवर्प. So now we proceed ahead. The same steps which we followed in our first practice question, उन्हीं को हम आगे follow करेंगे. Let's go now. Now, what do we find here? That the Genberg's standard time, Genberg's standard time is -1 hour. The question wants us to find the height of tide at Genberg at 1200 GMT. So we need to find out what shall be the time at the secondary port. Now, we all know that GMT, for which the tide height is required, is 1200 hours on 6th of March. The time zone for Genberg is -1 hour. That means Genberg time is 1 hour ahead of Greenwich time. That means the height of tide required at Genberg is 1300 hours Genberg time on 6th of March. The tide required is for 1300 hours on 6th March at Genberg. Okay, so beta, this is also clear. Yes, sir. Okay, all right. Why we needed this in this question is because जो question में उन्होंने हमसे टाइम पूछा था वो GMT टाइम पूछा गया है. हमें पता है कि टाइड टेबल्स में जो टाइम हमें दिया रहता है वो लोकल टाइम होता है. इट इज़ द लोकल टाइम एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. सो अगर हमें 1200 GMT के लिए हाइट ऑफ टाइड निकालनी है, वी नीड टू नो व्हाट विल बी द टाइम एट Genberg at 1200 GMT. So we saw the zone here, zone is -0100. So longitude is also easterly. You see the longitude is easterly, longitude east, GMT least. So we added this 1 hour to the GMT to get the Genberg time. 1300 is the time. So we need to find out the height of tide for 1300 hours. Let's proceed ahead now. I hope this part is clear. If you have any doubts about the time, please do consolidate and revise the concepts regarding time. We shall be using the same tidal calculation form or tidal prediction form that we had used for the previous example. Now बेटा आप ये टेबल जो है ये बना सकते हो अपनी नोटबुक में. So it is the same table which we used in the last example also. So just make this table and so that needs no introduction. So let's now start filling up the tidal prediction form from the information that we are already familiar with. I'm sure you'll agree with me, and please keep revising as the video is playing. Standard port Antwerp, port number 1539. What is required? Required is height of tide as at 1300 hours Genberg time. Which is the secondary port? Genberg. What is its number? 1539 delta. Date in question, I'm sure 6th March 1992. Time zone for Genberg, it's -0100 hours. Everything is being encircled on the screen. I'm sure it's clear to you. Next in the tidal prediction form is the standard port time and height of low and high water.
Obviously, we need not calculate for all the highs and low on that day. We need to be interested only in the relevant one. How do we figure out the relevant one? You see, we go to the part 1 of the ATT for Antwerp. We look at the predictions, and what do we find? On 6th of March, these are the predictions for Antwerp. Now you see, at 0428, we have high water at Antwerp. The high water difference, time difference, is to the tune of about 4 hours. You can see from here where the highlighter is, plus 4 hours. So when we add plus 4 to this, we get a time of around 08 or 09 in the morning. Then we have a low water at 11:05. The low water difference is to the tune of about plus 6 hours. When we add 6 hours to it, it becomes about plus 17. What is the time for which height of tide is required? It's 1300 hours Genbrook. So obviously, when we apply these time differences to the high and low water at Antwerp for 428 and 11:05, it takes us to the range in which 1300 hours shall fall. So the tide of interest to us would be the high water at 428 at Antwerp and 11:05 low water at Antwerp. And so we can avoid our working for 4 tides and we can limit it only to 2. We have at 428, it's 6 meters of high water at Antwerp. At 11:05, we have a low water of 0.1 meter at Antwerp. Okay, so beta, have a good look at this. Let me know any doubts coming in your mind. सर इसे समझा दीजिए. यहाँ पे एक डाउट है ये सर Okay. डाउट. ओके बेटा, क्या डाउट आ रहा है सर। माइंड में? अगर क्वेश्चन में पूछता कि उस दिन की पूरी प्रोडक्शंस बताओ, तो हम इसे Right. पिछले वाली डेट में जाके चेक करते. दैट्स राइट बेटा. अगर वो हमसे पूछता कि हमें 6 मार्च 1992 को जेंटबर्ग का टाइड चाहिए, सो देन जो भी 5th डेट का लास्ट टाइड होता, हमें पता है कि उसमें अबाउट 6 घंटे ऐड हो जाते, 6 आवर्स ऐड हो जाते, तो हम वो पिछली वाली फिगर को भी पिक करते. और सर ऐसे ही करके हम नेक्स्ट डे में भी घुस रहे थे, तो ये 6 फिगर्स हो जाती है हमारे पास टोटली. हाँ, दैट्स राइट बेटा. नाउ वी आर गोइंग इनटू हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि हमें 6 मार्च का टाइड पूछा गया है. अब आप देखो, अगर 6 मार्च का टाइड पूछा जाता तो जैसे मैंने आपको बताया, हम 5th की लास्ट वाली वैल्यू भी पिक करते. लेकिन उस केस में आप देखो, जो ये 2313 की वैल्यू है बेटा, लो वाटर वाली, इसमें जब हम 6 घंटे ऐड करते तो ये नेक्स्ट डे में चली जाती. सो हम इसको छोड़ देते, 2313 को हम छोड़ देते. सो हमारे पास 4 ही वैल्यूज रहती, 5th की लास्ट वाली और 6th की फर्स्ट 3. ओके सर. ओके बेटा, अंडरस्टूड. सर प्लीज दोबारा बताना जी. यस सर. ओके बेटा, ये एक हाइपोथेटिकल सवाल इन्होंने पूछा था कि अगर हमें 6th को फुल डे का टाइड पूछा गया होता तो हम कौन सी वैल्यूज उठाते. तो ऐसे केस में पहली 3 वैल्यू जो आप देख रहे हो, इनको हम पिक करते और 5th डेट की जो लास्ट वैल्यू होती उसे भी पिक करते. हम 2313 की वैल्यू को छोड़ देते. ओके सर. ओके, और क्या डाउट है बेटा? तो सर हम इस केस में सर हम क्या करेंगे? ओके, इस केस में बेटा हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें किस टाइम के लिए हाइट ऑफ टाइड चाहिए. वो हमें पता है 1300 के लिए चाहिए, 1300. सो अब आप देखो, जो ये 0428 पे हाई वाटर हो रहा है, 6 मीटर का टाइड है, हाई वाटर है. हाई वाटर में आपकी टाइम करेक्शन कितनी आ रही है? 4 घंटे 15 मिनट से 4 घंटे 30 मिनट तक की टाइम करेक्शन आ रही है, करेक्ट? यस सर करेक्ट. तो इसका मतलब है कि आप अबाउट 4-4.25 घंटे का टाइम पीरियड जो है ये ऐड करने वाले हो इस वैल्यू में,
जब आप ये इसमें ऐड करोगे तो जेंट ब्रग के लिए ये पहला वाला टाइम कितना हो जाएगा बेटा? सर 8 बज जाएगा तो। हाँ, 8 to 9, 8 से 9 बजे के बीच का टाइम आएगा, करेक्ट? यस सर, यस सर। ओके, तो 8 से 9 बजे का टाइम हमें 0428 के टाइड के लिए मिलेगा। अब बताओ बेटा 1105 को जब जेंट ब्रग पे हम ट्रांसफर करेंगे तो ये टाइम कितना होगा, अंदाजा अप्रोक्सीमेटली? सर 11 + 6 हो जाएगा। वेरी गुड, ये हो जाएगा 1700। 17 हो जाएगा सर। तो 428 वाला फर्स्ट टाइड 6 मीटर का जो टाइड है ये आता है सुबह 8-9 बजे, और 0.1 मीटर का जो टाइड है ये आता है 1700 पे। 1300 इन्हीं दोनों के बीच में लाई कर रहा है। यस सर। तो हम सिर्फ इन्हीं दो को पिक करेंगे, हमें 1642 और 2313 को उठाने की ज़रूरत नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। ठीक है सर। ओके, और बताओ बेटा और क्या डाउट है? बस सर वेरी गुड। सो अब आप देखो हमने यही दो वैल्यूज पिक की हैं, 0428 हाइट ऑफ टाइड इज 6.0, 1105 हाइट ऑफ टाइड इज 0.1। हम इन्हीं को सेकेंडरी पोर्ट के लिए अब करेक्ट करेंगे। लेट्स गो। I hope you're comfortable. If you're not comfortable, you could be interpolating for all the four and then figure out towards the end. But obviously in an exam scenario, that shall cost you time. Other two things we can leave blank. So we don't need to work out these. I hope it's clear to you. If you have any doubts, you can always send out your concerns to us. We shall try and respond to them. Next to be filled in is the seasonal change for the standard port. We already know from where to get the seasonal change. It has to be algebraically subtracted. You can see the information showing up on the screen. What is the port number for the standard port Antwerp? 1539. You can see on the screen everything getting encircled. What is the month in question? March. What is the seasonal correction for Antwerp then? It's minus 0.1. Now it has to be algebraically subtracted. You can see minus signs already being in place. So now we capture the correction for Antwerp, minus 0.1, minus 0.1. And when this is multiplied by this minus, because it has to be algebraically subtracted, effectively it shall become plus 0.1 and plus 0.1. I hope it's clear to you. Next are the differences, time difference and the height difference. For time difference, we have this data on the screen which is shown up. We already know the process now. Okay. Beta, is the seasonal correction okay? Yes, sir. यस सर। Okay, very good. सर ओनली नंबर में जाके जिसमें नंबर लाई कर रहा होगा वहीं से उठा लेंगे सर डायरेक्ट। That's right बेटा, that's right. ये देखो, ये आप देख रहे हो हमने 1534 to 1571 वाला जो रो है इसे पिक किया था क्योंकि हमारी पोर्ट का नंबर था 1539. सो वी वेंट टू द मंथ ऑफ मार्च एंड हमने ये करेक्शन देखी, दिस वाज माइनस 0.1. सो हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सो इट विल बी माइनस माइनस 01 मींस माइनस माइनस ऐड होके प्लस बन जाएगी. यस सर। ओके, minus 0.1. Now it has to be algebraically subtracted. You can see minus signs already being in place. So now we capture the correction for Antwerp, minus 0.1, minus 0.1. And when this is multiplied by this minus, because it has to be algebraically subtracted, effectively it shall become plus 0.1 and plus 0.1. I hope it's clear to you. Next are the differences, time difference and the height difference. For time difference, we have this data on the screen which is shown up. We already know the process now. For high water, we have this part which shall apply. What is the time for our high water?
0428. Okay. So beta, can you tell me in which values we are going to interpolate now for our height differences? सर So from 0000 to 050. वेरी गुड बेटा. सो 0000 के लिए जो हमारा हाइट डिफरेंस है, सॉरी जो टाइम डिफरेंस है, दैट इज +430. और 5 बजे के लिए 0500 के लिए जो डिफरेंस है दैट इज 415. सो 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है दोनों के दोनों वैल्यूज में, और ऊपर में 5 घंटे का डिफरेंस है. हमें किसके लिए डिफरेंस चाहिए? हमें चाहिए 428 के लिए. सो लेट्स इंटरपोलेट. सर हमने 0000 से 0500 क्यों लिया सर? बेटा आप कौन सी वैल्यू लेना चाहते थे? 000 के बाद आप दूसरी वैल्यू कौन सी लेना चाहते हो? सर 1700. ओके. अब अगर आप बेटा 1700 की वैल्यू लेते हो तो 000 पे डिफरेंस 430 का था, 1700 पे ये 415 का है. लेकिन इन दोनों के बीच में 5 बजे और 12 बजे का टाइम भी आता है ना. 5 बजे ये डिफरेंस 415 था और 12 बजे ये 430 था. तो अगर आप 0 से 17 सीधा ले लोगे तो 5 और 12 की जो वैल्यूज हैं वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी ना बेटा. सो वी कैनॉट इंटरपोलेट डायरेक्टली फ्रॉम 00 टू 17. हमें तो 00 से नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है उसी में जाके इंटरपोलेट करना है. 000 के बाद नेक्स्ट वैल्यू आएगी 5 बजे. सर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, 0500 टू 1200. ओके. अगर मैं इसे 5 से 12 का इंटरवल लेता हूं तो बेटा मेरा टाइम देखो वो तो 428 है, वो तो 5 बजे के पहले आता है ना. सो 5 से 12 के बीच में तो वो टाइम आएगा ही नहीं. ओके सर, तो हम सर 0000 से 0500 जब ले रहे हैं तो सर इसमें 1105 नहीं आएगा ना सर? नहीं बेटा, 1105 इसमें नहीं आएगा. नाउ टेल मी 1105 कौन से इंटरवल में आएगा? 0500 टू 1200. वेरी गुड सर वो बेटा. लो वाटर में कंसिडर करेंगे सर, वो वाला 0600 एंड 1200 में लो वाटर. दैट्स राइट बेटा. आप देखो 1105 का जो टाइम है वो लो वाटर का टाइम है. सो उसके लिए हम लोग जो लो वाटर की वैल्यूज है ना, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, इनमें आके पिक करेंगे. और जो इंटरवल यूज होगा वो यूज होगा 6 बजे से लेके 12 बजे तक का, 6 to 12. ठीक है सर, आ गया सर. ओके. राइट बेटा, राइट. लेट्स गो. 0428 shall lie in the range of 000 hours to 0500 hours. So we have, you can see on the screen out here, at 000 hours, the time difference is plus 0430. Then at 0500 hours, the time difference is plus 0415. ओके. अब बेटा मुझे कैलकुलेटर में ये कैलकुलेट करके बताओ कि 428 के लिए हमारा टाइम डिफरेंस कितना आना चाहिए. सो एवरीबॉडी पिक अप योर कैलकुलेटर्स एंड टेल मी द. 0417. ओके, 0417. और बेटा बाकी लोगों को भी करने दो. सर ये मेरे को पूछना था कि सर राउंड ऑफ कैसे करना है. सर कई बारी जैसे मिनट्स की कैलकुलेशन करते हैं तो डेसिमल समथिंग मिनट्स भी आता है, तो सर राइट उस बेटा. केस में क्या करें. बेटा अगर 0.5 से छोटी वैल्यू आ रही है तो पिछले मिनट पे चले जाओ, और अगर 0.5 या उससे बड़ी वैल्यू आ रही है तो अगले मिनट में चले जाओ. ओके सर, थैंक यू. So everybody got it beta? Everybody got the answer? Yes, sir.
Anybody having difficulties here? Okay, great. Let's go ahead. And what is the time of our high water? It's 4:28 falling here. And we interpolate, and what is the time difference we get? We get plus 0417. Please interpolate, have a calculator handy, keep interpolating as we are moving. Okay. So all okay with 417 beta? Everybody got the answer? Anybody stuck here in interpolation? No, sir. No, sir. Very good beta. Great. So let's go ahead now. We have the time difference available to us. And we capture this time difference out here. Then we go to the low water part, because now we have the low water at 1105, and 1105 shall lie in the range of 0600 to 1200 hours. So we can see it here. When its low water is at 0600 hours, the time difference is plus 6 hours. You can see it from here. When the low water is at 1200 hours, the time difference is plus 630. So beta, can you interpolate now and tell me what will be the difference for 1105? So 0626. Okay. Everybody got it, beta? Yes, sir. Okay, great. Our low water lies at 1105. So that by interpolation, the time difference becomes plus 0626, which gets captured out here. And this is how we work out the time difference. Now we come to the height differences. Here we have the height differences for the high water. So when you have mean high water spring of 5.8 meters, the height difference is minus 3.9. When you have mean high water neaps of 4.8 meters, the height difference happens to be minus 3.3 meters. Okay. So अब बेटा हम हाइट डिफरेंस पे आ गए हैं. हमें अब 6.0 मीटर टाइड के लिए हमारा हाइट डिफरेंस चाहिए. जो वैल्यू उन्होंने हमें दी है 5.8 के लिए दे रखा है माइनस 3.9, 4.8 के लिए दे रखा है माइनस 3.3. हमें चाहिए वैल्यू 6.0 के लिए. सो कैन यू नाउ टेल मी कि 6.0 के लिए हमारा हाइट डिफरेंस क्या आएगा बेटा? Sir, 4.0. Minus of 4.0. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रापोलेशन. देखो हमारी जो वैल्यू है ये दोनों फिगर्स के बीच में नहीं आ रही है, ये बाहर है उससे, पर फिर भी हम इंटरपोलेट करके पता लगा सकते हैं कि 6 मीटर की हाइट के लिए हमारा डिफरेंस क्या होगा. सो एवरीबडी ओके बेटा विद माइनस 4.0? Yes, sir. Okay beta, very good. Meters. What's our high water in question? It's 6 meters. 6 meters shall lie outside or on the higher side of 5.8 meters. So we shall be extrapolating this minus 3.3 to minus 3.9 and extrapolating for 6 meters of high water height, and we get this as minus 4 meters. I hope this extrapolation issue is now clear to you. And we capture this as minus 4. The other two, as far as high water is concerned, is not applicable to us. So that does not work out here. So now we talk about the low water.
When the mean low water needs happens to be 0.8 meters, height difference is minus 1.1. When the low water spring is 0.3 meters high, the height difference is minus 0.4. What is the height difference required in our case? Height difference required in our case is 0.1. Okay, so can you tell me beta, calculate and find out 0.1 height के लिए हमें difference क्या मिलेगा यहाँ से? सर ये वाला आ नहीं रहा था, प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। Okay. तो minus 0.1. Okay, minus 0.1. Okay, all right बेटा। देखो बेटा, अगर इसमें डाउट हो रहा है, आप ध्यान से देखो, जब हमारी हाइट ऑफ टाइड 0.8 मीटर है, 0.8 मीटर, तो उसके लिए डिफरेंस कितना आ रहा है? माइनस 1.1। जब हमारी हाइट ऑफ टाइड 0.3 मीटर है, तो उसके लिए डिफरेंस कितना आ रहा है? माइनस 0.4। अब आप देखो 0.8 टू 0.3 कितना चेंज आ रहा है बेटा हाइट में? 0.5 सर। 0.5 का चेंज आ रहा है। ओके, लेट मी शो इट टू यू ऑन द व्हाइट बोर्ड। 0.5 की हाइट में अगर चेंज आती है, तो बेटा हमारी जो करेक्शन उसमें कितनी चेंज आ रही है? 0.7 सर। वेरी गुड, 0.7 की चेंज आ रही है। अब हमें जो करेक्शन चाहिए वो किसके लिए चाहिए? वो 0.1 के लिए चाहिए। यस सर। राइट बेटा, अब जो 0.1 है वो तो इस रेंज से बाहर चला गया है। 0.8, 0.3 इन दोनों रेंजेस से बाहर है ये। ओके, सो यस सर। अब हम क्या करेंगे? 0.1 और इससे नियरर वाली वैल्यू जो है 0.3, इन दोनों में कितना डिफरेंस है बेटा? 0.2 सर। 0.2 का है। हम 0.2 के लिए करेक्शन निकालेंगे। 0.5 के लिए करेक्शन थी 0.7। 1 मीटर के लिए करेक्शन होगी 0.7 डिवाइडेड बाय 0.5। राइट बेटा, और हमारा जो डिफरेंस है वो है 0.2 का। तो 0.2 के लिए कितनी करेक्शन होगी? 0.2 के लिए करेक्शन हो जाएगी 0.7 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। सो कैन यू टेल मी बेटा ये कितना आंसर आ रहा है? सर 0.12। 0.12 इतना आंसर आ रहा है। हम इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं टू वन प्लेस आफ्टर द डेसिमल। अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या बनेगा? 0.1। 0.1 बनेगा। अब बेटा हमने जो डिफरेंस लिया था वो 0.3 की वैल्यू से डिफरेंस लिया था अपनी वैल्यू पे। 0.3 पे करेक्शन कितनी थी? माइनस 0.4। हमारा डिफरेंस कितना है? 0.1 का। अब ये डिफरेंस हमें माइनस 0.4 पे लगाना है। अब ये बात आती है कि सर ये ये इसमें 0.8 है मेरा। हाउ मच यू आर गेटिंग बेटा? 2 बिट आएगा सर। से अगेन बेटा। 0.28 सर, 0.12 की जगह पे। ओके, इसकी बात कर रहे हो बेटा? हाँ यस सर। सर मेरा गलत आया सर, 0.28 आएगा। ओके, ओके बेटा, ओके, ऑल राइट, लेट्स करेक्ट इट। सो दिस इज 0.28। राइट बेटा, ओके नाउ? यस सर। ओके, अब इसे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा बेटा वैल्यू? 0.3 सर। वेरी गुड, 0.3 हमारा डिफरेंस आ गया। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट, देयर इज ए इंपॉर्टेंट कॉल।
ओके बेटा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सो एनीवे, सो हमने बेटा इंटरपोलेट करके देखा कि हमारा जो डिफरेंस है ये 0.3 आ रहा है. नाउ दिस इज टू बी अप्लाइड टू 0.3 हाइट वैल्यू. 0.3 की करेक्शन थी -0.4. अब ये डिफरेंस मुझे अप्लाई करना है. अब मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं. यहाँ भी एक कंफ्यूजन आ सकता है किसी को कि ये 0.3 को मैं इसमें ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं. अगर मैं 0.3 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है -0.7. एक आंसर आता है -0.7. और अगर मैं 0.3 को इसमें ऐड करता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है -0.1. राइट बेटा, ये भी डाउट आ सकता है. अब ये डाउट कैसे रिजॉल्व होगा? बहुत सिंपल है. आप ये देखो कि जो वैल्यू आपको चाहिए थी हाइट 0.1, वो इन दोनों के बीच में है या नहीं है? Is it in between these two or outside these two? आउटसाइड सर. Outside. तो जो हमारी करेक्शन आई है वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए या बाहर होनी चाहिए? बाहर सर. वो भी बाहर होनी चाहिए. तो बाहर वाली वैल्यू कौन सी है? 0.7 या 0.1? 0.1 सर. 0.1 है. So this is the correct answer. So is it clear now beta? यस सर. Very good beta. So let's apply it. Where shall point 1 be lying? It shall be lying on the lower side. That means again extrapolation issue. So when you extrapolate from -1.1 to -0.4, we get this value as -0.1. So the height difference at low water shall be -0.1. Again, these two spaces, because we are only interpolating for two tides, one high and one low, obviously they do not apply in this particular case. So what have we got? We have got the height difference for high water as well as low water now. Last step, algebraically add the seasonal change for the secondary port. So you can already see plus sign out here, algebraically to be added. Information comes from the same seasonal change thing against the port number 1539D. And I'm sure you'll agree, month in question March. And what is the correction? -0.1. They are incidentally same between standard and secondary port. They could also be different. So please do not take it for granted. We apply the seasonal correction algebraically adding it for the secondary port. And that's where we basically apply all the correction. So we now simply do the addition subtraction. We get the time of high water as 8:45. We get the time of low water as 1731. We get the height of high water as 2 meters. And we get the height of low water as 0.0. That means at low water, the sea level is same as the chart data. Okay, so just calculate beta. Let me know if any doubt. देखते हैं आगे बेटा. Right? So basically, required height of tide at 1300 hours on 6th March at Jenbrug, which will be same as GMT 1200 hours, shall be basically interpolated between a high water at 0845 hours when it's 2 meters and low water at 1731 when the height of tide is 0 meters. I'm sure now getting the height of tide at Jenbrug at 1300 hours Jenbrug time should not be a problem. For getting the height of tide, we shall use the diagram of the standard port for interpolation, and the standard port happens to be Antwerp. So here we have the diagram for Antwerp. So we have high water at 0845 with height as 2 meters. We have low water at 1731, height 0 meters. So the duration of tide becomes 8 hours 46 minutes and the range of tide is 2 meters.
Now we need height of tide for 1300 hours Gen per time. High water was at 8:45. So the interval shall be obviously after high water. The interval from high water becomes 4 hours, 15 minutes after high water. So now we go to the diagram here and we exactly do the same things as we did for the standard port. Only thing is the height of tide, duration and everything has to be used for the secondary port. So what do? First we draw the interpolation line for which we mark off the low water. On the lower scale, we mark off the high water on the upper scale. We join them with a straight line, that's the interpolation line. Now we go to the baseline and identify 4 hours, 15 minutes after high water. And we go vertically up. Now, what range do we go up? The spring range is 5.5 meters, neap range is 4 meters, R range is 2 meters. For ATT volume 1, if you remember, for standard ports, extrapolation is not allowed. If the range is less than the neeps, you shall use the neep curve. Okay, so beta, this is the important thing here. अभी तक जो हमने किया ये तो हमें पता है, हम लो वाटर मार्क करते हैं नीचे, हाई वाटर मार्क करते हैं ऊपर. जैसे इनको ज्वाइन करते हैं हमें इंटरपोलेशन लाइन मिलती है. एंड वी फाउंड आउट व्हाट इज द इंटरवल ऑफ द 1300 टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम हाई वाटर. हमें ये मिला 4 घंटे 15 मिनट आफ्टर हाई वाटर. सो हम लोग हाई वाटर से प्लस रेंज में चले गए. प्लस रेंज इज आफ्टर हाई वाटर. 4 घंटे 15 मिनट पे हमने ये वर्टिकल लाइन अपवर्ड ड्रॉ की. अब ये लाइन जो है डॉटेड लाइन को भी टच कर रही है यहाँ पे, और अगर इसे ऊपर लेके जाएंगे तो सॉलिड लाइन को भी टच करेगी. कहाँ पे रुकें? डॉटेड पे रुकें, सॉलिड पे रुकें, या बीच में कहीं रुकें? इसके लिए हम क्या चेक करते हैं? देखो बेटा, डॉटेड लाइन इज फॉर नीप रेंज. यू कैन सी इट इज फॉर ए रेंज ऑफ 4.0 मीटर. Solid line is for spring range which is 5.5 meters. हमारी रेंज क्या है? हमारी रेंज है 2.0 मीटर. हमारी रेंज तो 4 मीटर से भी कम आ रही है. सो ऐसे केस में बेटा हमने पहले भी देखा था, अगर हमारी रेंज स्प्रिंग और नीप से आगे या पीछे बाहर चली जाती है तो हम स्प्रिंग या नीप जिस भी तरफ वो हमारी रेंज हो उसी के ग्राफ को यूज करते हैं. सो हमारी रेंज 2 मीटर बाहर चली गई इन दोनों वैल्यू से, पर हम जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दी गई है वो है 4 मीटर की वैल्यू, उसी को यूज करेंगे. सो वी स्टॉप एट द डॉटेड लाइन फॉर द नीप रेंज 4.0 मीटर. सो इज दिस क्लियर बेटा? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. वेरी गुड बेटा. सर एक डाउट था इसमें. हाँ हाँ बोलो बेटा. सर जैसे ये इस केस में तो हमें स्प्रिंग और नीप में 2 लाइंस मिली हुई हैं. जैसे Right. सर लिवरपूल है, मैंने एक Right. क्वेश्चन ट्राई किया था उसका, तो उसमें सर एक साइड में मतलब ओनली ये कॉन्टिन्यूस लाइन है स्प्रिंग वाली, तो उस Okay. केस में सर हम कौन सा चूज करेंगे? बेटा उस केस में तो बहुत ही आसान है. अब जैसे देखो यहाँ भी आप मेरे कर्सर को देखो, ये जो छोटा सा पार्ट है एक ही लाइन है ना यहाँ पे. यस सर. सो अगर ये वाला टाइम आ जाए, लेट अस से हाई वाटर से 15 मिनट पहले, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे. यहाँ तो एक ही लाइन है, 2 लाइनें है ही नहीं. तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमें कहाँ रुकना है. चाहे स्प्रिंग हो चाहे नीप हो, कोई भी रेंज हो, हमें तो इसी लाइन पे जाके रुकना है और फिर हॉरिजॉन्टल चलना शुरू कर देना है. वो तो बहुत ही आसान हो गया बेटा. ओके सर, तो उस केस में सर हमें इंटरपोलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज राइट बेटा, नो इंटरपोलेशन इज रिक्वायर्ड देयर. ओके सर, थैंक यू. Okay, so let's now proceed ahead. So from here, we go and hit the neap curve, we turn left, and we hit the interpolation curve. Once we hit the interpolation curve, we go vertically up, and we hit this scale out here, and from the scale, we read off the height of tide at 1300 hours Gen per time. And this height we read from the scale as 0.55 meters. So the height of tide on 6th March at 1300 hours Gen per time
which will be same as GMT 1200 hours, is 0.55 meters. I hope it's clear to you. Okay. So